Hello everyone, a very warm welcome to my channel Success Drivers by Deepti. In my today's video, we are going to learn about NES 103. Here we are going to start with Unit 4 and the name of the Unit 4 here is Enhancing Learning Skills. So one of the most important units here we are going to cover. Let's begin. So let's first understand that what is learning. हमारी पूरी यूनिट्स में अभी तक हमने पढ़ लिया है कि क्या होती है लर्निंग. लर्निंग इज बेसिकली द मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर अभी भी कोई लोग ऐसा समझते हैं कि लर्निंग का मतलब है एग्जाम में रट्टाफिकेशन से पास हो जाना, दैट्स entirely wrong. That's a narrower perspective. When we are talking about the broader perspective, then we can say that learning is the modification in the behavior of an individual. So that's what is called as learning. But हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे जो है अपने लेवल के अकॉर्डिंगली कम लर्न कर पाते हैं, जिनको बहुत सारे डिफेक्ट्स का फेस करना पड़ता है, जिनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही बुरे आते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर चिल्ड्रन. सो लेट्स नो अबाउट देम एंड देयर परफॉर्मेंस. सो हियर द टॉपिक सेज व्हाई डू चिल्ड्रन फेल टू परफॉर्म. सो लेट्स लर्न अबाउट दिस टॉपिक हियर. द फर्स्ट पॉइंट हियर सेज lack of positive attitude towards studies. When the children they do not possess a positive attitude towards study, when they are not able to pay the attention, they are not focused in the class, or maybe they do not have any interest in that particular topic, they fail to learn that topic. तो यानी कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका फोकस नहीं होगा, in that case he would never be able to learn anything. He would never be able to modify his behavior. The second point says lack of interest in the studies. So lack of interest की वजह से क्या होता है, जब हमारा ध्यान ही नहीं पहुंच पाता, जब हमारा मन नहीं होता पढ़ाई में, तो यानी कि क्या होगा, हमारी लर्निंग जो है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी एक स्टेज पर आकर, यानी कि हमारी लर्निंग जो है वो बैकवर्ड हो जाएगी. द थर्ड पॉइंट हियर सेज एजुकेशन नॉट बीइंग वैल्यूड एट सम प्लेसेस, स्पेशली एट सम सराउंडिंग्स. सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पुअर फैमिलीज की, जहाँ पर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हमारे पास आते हैं, यानी कि जो पहली बार अपने पूरे खानदान में से सबसे पहला बच्चा होता है पढ़ने वाला, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे लर्न करने के लिए आते हैं. उनकी फैमिलीज को कुछ भी नहीं पता होता एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में. अब ऐसे में क्या होता है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करता है, जिसकी वजह से उसकी लर्निंग जो है वो भी हैम्पर हो जाती है. The next point here says unstimulating environment. अब ऐसे में क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की जो फैमिलीज होती है वहाँ पे वर्क के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, बच्चों को पैसा कमाने के लिए ज़्यादा फोर्स किया जाता है बच्चों को बहुत ही छोटी स्टेज पर. अब ऐसे में क्या होगा, बच्चों को एनवायरनमेंट नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, यानी कि इट्स एन काइंड ऑफ एन unstimulating environment. The stimulus here is not present. The child is not able to learn because he is not getting the proper atmosphere to study. The next point here says is overworked at house. अब स्पेशली गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं तो गर्ल्स को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, हाउस होल्ड कोर्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है. घर के सभी कामों को इकट्ठे उसे देखना होता है, साथ में अपने घर की सभी कामों के साथ साथ अपने सिबलिंग्स को भी उन्हें देखना होता है. ज़्यादातर लड़कियों के ऊपर ऐसा प्रेशर होता है अगर हम बात करते हैं रूरल एरियाज की. तो अब ऐसे में क्या होता है, बच्चों को अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, स्पेशली गर्ल्स को अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, स्टडीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता है, और उनका जो रिजल्ट होता है वो लैक करने लगता है, उनकी जो लर्निंग है वो हैम्पर होने लगती है. द नेक्स्ट पॉइंट हियर सेज अनएबल टू अंडरस्टैंड द टीचिंग मेथोडोलॉजी. कई बार ऐसा होता है कि टीचर का पढ़ाने का तरीका जो है वो बच्चों को समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से बच्चों की लर्निंग जो है वो हैम्पर हो सकती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्केयर्ड ऑफ टीचर और बीइंग थ्रेटेंड. कई टीचर्स जो है वो मार मार के पढ़ाते हैं बच्चों को, पनिशमेंट्स देते हैं बात बात पे, जिसकी वजह से बच्चों को टॉर्चर्ड फील होता है. जब बच्चे को टॉर्चर्ड फील होता है तो उसका मन ही नहीं करता पढ़ाई में, उसे हर समय डर लगा रहता है कि कभी भी टीचर आके मुझे डंडा मार सकते हैं. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. एक स्टिपुलेटिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए स्कूल के अंदर, जिधर कि बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके. नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल प्रॉब्लम्स. बच्चों की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है. एडोलेसेंस में जब बच्चे आते हैं, चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में, तो उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है. अपनी आइडेंटिटी को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे, जो कि बच्चे नहीं कर पाते हैं. तो पर्सनल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भी कहीं ना कहीं बच्चे सफ़र करते हैं.
Next point is poor self concept. So here we are talking about the stage of adolescence, जब बच्चों का self concept जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है. बच्चे जो है अपने बारे में सही नहीं सोच पाते हैं. उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं बहुत कम हूँ दूसरों के मुकाबले में. वो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं दूसरों से, और कहीं ना कहीं इन सब बातों के चलते हुए उनकी स्टडीज जो है वो इफेक्ट हो जाती है. उनकी लर्निंग जो है वो रुक जाती है वहीं पर. नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट हियर सेज अनअवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन. कई लोग एजुकेशन को वैल्यू नहीं करते हैं और अपने बच्चों को भी यही बात बोलते हैं, भले ही उनके बच्चे स्कूल में एनरोल्ड हो या ना हो, वो अपने बच्चों को भी यही कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, जाके पैसा कमा. सो दिस इज द टिपिकल वर्ड्स दैट आई कुड हैव हर्ड फ्रॉम समवन. सो हियर एजुकेशन इज नॉट एट ऑल वैल्यूड. जब हम एजुकेशन को वैल्यू नहीं देते हैं तो लर्निंग को कहाँ से देंगे? दैट्स वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड डिट्यूरेट्स. सो दिस वॉज हाउ वी कैन सी दैट there is a failure in the learning of the children. Now let's see how can we overcome these things. So now we are going to learn about that how can we overcome these problems, how can we help the children to increase their level of learning, how can we help the children to improve the level of education with us. So let's learn about this. How can a child can be helped to give a good performance in the school? So let's start learning about this. The first point here says help the children to realize the importance and the need of education. So nowadays we need we need to counsel our children, we need to assist them, guide them regarding education. कई बार फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की अगर बात करते हैं तो उनकी फैमिलीज को हमें प्रॉपर गाइडेंस देनी होगी कि क्यों बच्चों के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्या कर सकते हैं वो एजुकेशन की मदद से, और अगर उन्हें एजुकेट ना किया जाए तो उनके लिए क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं. अगर हम ये बात उनको कन्वे कर देंगे तो ज़रूर बच्चे इनरोल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की लर्निंग हो पाएगी. नेक्स्ट पॉइंट हियर सेज वर्किंग ऑन द बेसिक्स ऑफ द स्किल्स. सो हियर वी नीड टू फोकस ऑन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. सो these are the four most important skills that we need to focus in the school. अगर एक बच्चे को बहुत मुश्किल एडवांस आंसर्स, कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स नहीं समझ में आते, इंट्रिकेट चीज़ें नहीं समझ में आती, इन दैट केस यू कैन गो अहेड विद द बेसिक थिंग्स. एटलीस्ट बच्चों की जो बेसिक स्किल्स होती है वो इम्प्रूव हो जाएंगी तो वो आगे जाके सोच सकते हैं पढ़ाई करने का. वो लोग आगे जाके सोच सकते हैं कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. सो देयर इज नो बेटर ऑप्शन दैन इम्प्रूविंग द बेसिक स्किल्स ऑफ द चिल्ड्रन, दैट इज रीडिंग, writing, speaking and comprehension. Let's move ahead. Help the children to improve their self concept. हर बच्चे को काउंसलिंग मिलनी चाहिए, जो कि अब कहा भी जाता है कि हर स्कूल के अंदर काउंसलर है. सो काउंसलर्स को क्या करना चाहिए? बच्चों की जो सेल्फ कंसेप्ट है उसके ऊपर वर्क करना चाहिए. एक बच्चे को समझाना चाहिए द वे ही इज वेरी यूनिक एंड ही इज नो लेस देन अदर्स. ये अगर हमने एक बच्चे के दिमाग में डाल दिया तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है. अगर एक बच्चे ने इस बात को समझ लिया कि उससे अच्छा कोई नहीं है तो उसका सेल्फ कंसेप्ट जो है वो अपने आप राइज हो जाएगा. उसको कभी भी नेगेटिव सेंस नहीं लगेगी, उसका कभी भी सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ मोरल जो होता है वो डाउन नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट हियर सेज चिल्ड्रन शुड बी पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड. हमें बच्चों को पनिशमेंट्स नहीं देने चाहिए, इंस्टेड वी शुड वर्क ऑन द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ द चिल्ड्रन. सो अ पैट बाय द टीचर, अ पैट ऑन द बैक यू कैन से, शाबाशी देना, या फिर एक नॉर्मल स्माइल जो है वो भी बच्चे को एनकरेज कर सकती है. So why not go for these things instead of going for the punishment? The next point here says learning should be made joyful. Learning को पहले ज़माने की तरह ना बनाया जाए. रट्टोफिकेशन के ऊपर हमें concentrate नहीं करना चाहिए. Instead we should try to make the learning more creative. We should try to inculcate some divergent ideas within learning. So इस तरीके से बच्चे कुछ अच्छे तरीके से लर्न कर पाते हैं. Joyful learning, DIY ideas को include करके कुछ इस तरीके से लर्निंग को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट सेज टीचिंग मेथडोलॉजी कैन बी चेंज. अगर एक बच्चे को ब्लैक बोर्ड मेथड से नहीं समझ में आ रहा, लेक्चर मेथड से नहीं समझ में आ रहा, सो व्हाई नॉट गो फॉर द एक्सपेरिमेंटल मेथड? व्हाई नॉट इंड्यूस द चाइल्ड टू मूव टुवर्ड्स सच अ मेथड? सो इसमें क्या होगा, बच्चे को हम लोग डायरेक्टली कोई भी चीज़ बता देते हैं डिडक्टिव मेथड के थ्रू. इंस्टेड वी कैन हेल्प द चाइल्ड टू मूव टुवर्ड्स द इंडक्टिव मेथड, जहाँ पे उस फॉर्मूला को वो खुद खोजेगा. इट इज़ गोइंग टू टेक द टाइम, आई नो दैट थिंग, बट ऑफ कोर्स वी कैन मूव with these methods so that the child is able to create the things by him or herself.
Next point here says providing a conducive environment. So conducive environment is stipulating environment, an environment where the child feels cozy and he is able to focus on his studies. Next one is assessing and evaluating the children. So at times we are having formative assessment and the summative assessment. So we can put in some quizzes, some riddles, some kind of crosswords in the class so that there is we can enhance the learning of the children. Next thing here is co-curricular activities. So nevertheless, co-curricular activities are as important as curricular activities. जितनी important curricular activities होती है, academics होते हैं, उतना ही important co-curricular activities होती है, sports, dance, music, arts, fine arts, whatever you can inculcate in this. All the co-curricular activities are as important as the curricular activities. So this is how we can raise the learning within the children. So let's proceed ahead with the next topic. So now let's proceed with the next topic, which is time management, and very important topic on the part of the valuable education. So let's proceed with this topic, which is the time management. Time management का क्या meaning होता है? Manage means to you, you have to allocate the right time to the right activities. So time management basically means that आप अपना time जो है वो सही तरीके से सही चीज़ों के ऊपर use कर रहे हैं. So let's read about this. Time management is the process of organizing and planning. It means dividing your time between the specific activities. We are having abundance of activities to be done in one day. बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक ही दिन में करने के लिए. अगर हमारे पास एक टू डू लिस्ट हो जिसमें कि हम चेक लिस्ट भी बना सकते हैं कि ये हो गया वो हो गया, इस तरीके से अगर हम मार्क करते रहेंगे तो हमारा टाइम जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा होगा, लेस इम्पॉर्टेंट के लिए कम होगा, और कहीं ना कहीं हमें पता होगा कि हमने आज कितनी एक्टिविटीज़ को पूरा कर लिया है. So this is what is called as time management. We need to be smarter at times to achieve our goals. This is what is the ambition of time management. So time management के बारे में पढ़ते हैं आगे. It enables us to work smarter so that we can get more work and in less time, even when the time is tight and pressures are high. So in the offices especially, जब बहुत सारे pressures होते हैं हमारे ऊपर, बहुत सारा काम करना होता है हमें, तब हमारे दिमाग में क्या आता है? Time management आता है. Now we need to make a to-do list and we need to work accordingly. We need to prioritize our things and then work accordingly. So that is what is called as the time management. Let's move ahead with the benefits of time management. क्या फायदा है टाइम मैनेजमेंट को, हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों ऐसा कहा जाता है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. सो लेट्स प्रोसीड अहेड विद दिस बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट. द फर्स्ट पॉइंट हियर से इज ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. आप इतने एफिशिएंट बन गए हैं कि आप टाइम टू टाइम अपनी सभी चीज़ों को करके दे रहे हैं. अब ऐसे में क्या होता है? यू आर गोइंग टू अर्न अ गुड रेपुटेशन एज वेल, विच इज द सेकेंड पॉइंट, बेटर रेपुटेशन. इन केस यू आर वेरी प्रोफिशिएंट, योर पोटेंशियल इज वेरी हाई, you complete the things on time. Now you are going to earn a good reputation in the company, in the school, being a student or being a teacher. So that is how you can have a good reputation. You can earn this by having a time management list with you. Next one is less stress. हमें बहुत कम स्ट्रेस होगा अगर हमारा सारा काम जो है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाता है. अगर हम लास्ट डे के लिए नहीं वेट करते जिस दिन हमें सारा होमवर्क सबमिट करना होता है, then we can say that yes, we are managing our time properly. We are doing each and everything on our टाइम. अगर मंडे का डेट दी गई है तो मंडे से पहले ही हमने करके दे दिया है काम. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द स्ट्रेस फॉर ऑल ऑफ अस. नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटीज. अगर आप अपना काम जो है वो टाइम से करके दे देंगे तो आपको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने का मौका मिल सकता है. आप जो टाइम सेव कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ और फ्रूटफुल आप एड ऑन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज टू अचीव द इम्पॉर्टेंट लाइफ एंड करियर गोल्स. सो दैट्स हाउ यू कैन मूव towards your career goals. You can achieve them with better time management skills. Let's proceed ahead. Time management includes, क्या होता है time management के अंदर, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है. Effective planning. सबसे पहला आइडिया होता है कि हमें प्लान करना है सभी ही चीज़ों को. अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं एक ही दिन में करने वाली, तो उनको क्यों ना प्लान किया जाए, उनको प्रायोरिटाइज किया जाए कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अभी फ़िलहाल में, उसको रखते हुए द लेस इंपॉर्टेंट लेस लीस्ट यू कैन मूव
move ahead like that. So effective planning is very important. Second point says setting the goals and the objectives. तो अगर आपका गोल है कि आपको इस चीज़ को जल्दी से जल्दी अचीव करना है, so that's how you're going to plan these things. अगर आपके लिए कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप प्लेस करेंगे सबसे टॉप पर. कोई चीज़ जो बहुत कम इंटरेस्टिंग है आपके लिए उसको आप लास्ट में प्लेस कर सकते हैं. अगर वो हो ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Next thing is setting the deadlines for yourself. So here says setting the deadlines for yourself. Deadlines मतलब अपने लिए खुद के लिए deadlines को prepare करना. अगर आपको पता है कि स्कूल का काम मुझे Wednesday को सबमिट करना है और अगर आप अपने deadline को रखेंगे Monday, so that means you're early, you're before the time, you're an early bird. So in that case, you're able to manage the time properly. So this is how you can set the deadlines for yourself and improve yourself. Next point here says delegation of responsibilities. You need to delegate the responsibilities here. Divide the responsibilities and take the accountability of your responsibilities. जो भी काम आप कर रहे हैं उसे टाइम से करिए, उसे सही से करिए. That's very important. Next thing here is prioritizing as per the importance. This we have already discussed. Last point here says spending the right time on the right activities. तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप सही टाइम पर सही चीज़ कर रहे हैं. ऐसा ना हो आपको कल एक होमवर्क सबमिट करना और आज आप बैठ के क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं. So you need to make it a point that you are doing the right activity on the right time. Next thing here is how can a child manage his or her time. So here this is specifically for the children, that how do children need to manage their time. Let's proceed. The first thing here is create a master schedule or the time chart. So as I said that you can prepare a to-do list. Whatever you need to do, you can put in one list and you can keep on ticking the things that you have already done. Next point here says use an agenda or create a target. So अगर आपके पास एक target होगा जिसे आपको achieve करना है, you would be focused, you would be attentive toward that thing. तो अभी क्या करना है, जब आप टाइम टेबल क्रिएट करेंगे तो कुछ चीज़ों के आगे डबल स्टार्स या सिंगल स्टार्स लगा दिए जाए जिससे कि आपको पता है this thing is to be done in time. You need to prioritize some things, that's very important, and this thing is to be completed within the specific period of time. That's how it goes. It's the agenda making. Next one is eliminate the distraction. Oh my god, this is the television, cell phone, your internet, your WhatsApp, Facebook, Instagram. So these are the biggest distractions that we are having nowadays for all the children, for all of us instead. So here we can say that we need to stay away from these distractions. Nowadays we are having some apps in our phone that regulate the apps within our phones कि कुछ देर तक कोई ऐप जो है वो नहीं चलेगा आपके फोन के अंदर. So that's how you can regulate the things for a particular period of time. And if not these, you need to reduce the number of hours you are spending on your cell phone or internet. Next thing here is set the goals for the study sessions. अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, you have to set a goal. I need to complete a particular unit within 3 hours. So let's go for 3 hours. We need to complete this unit within the 3 hours. Next one is start working on the assignments early. So early to bed, early to rise. Here works it. So यहाँ पे आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी आपको कोई ना कोई काम पकड़ना है. ऐसा नहीं है लास्ट डेट का वेट करते रहना है. You do not have to wait so much long. You need to do your work on time. Next thing is make a project plan. Again, you need to make a schedule, project plan. Next one is work on one thing at a time. एक टाइम पर एक ही चीज़ को करना है. आपको बहुत सारे काम लेकर इकट्ठे नहीं बैठने. You need not take abundance of things around you and just panic कि ये भी करना, वो भी करना, ऐसे करना, वैसे करना है. Instead of doing this, instead of panicking, you can do instead one thing at one time. That would be perfect. Next thing is study in shorter bursts. So shorter bursts का मतलब है छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए पढ़ाई किया कीजिए. That's how it goes. अगर आप 6-7 घंटे की लंबी पढ़ाई करना चाहते हैं, that's impossible. Being a teacher, being a student, I think it's impossible for all of us to sit at one place and keep on studying, keep on being focused at one thing at a time. That becomes very difficult. So instead you should go for the shorter bursts. छोटे छोटे आप timings के लिए बैठ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं. That's how you're going to perfectly
own your target. So the next point here says start early in the day. So now again comes the thing, early to bed, early to rise makes the man healthy, wealthy and rise. So here you need to sit down, just settle yourself in your bed before time. It should be 8 to 9 p.m. maybe. You should have your dinner on time, and instead of having your dinner at 12 o'clock in the night or at 11 o'clock in the night, that's very wrong. Let's proceed with a better schedule. So you should start your day with the early morning. So 5 o'clock is a perfect time to study. As the people say, as the researchers say, you can go ahead with this time. Next is get 8 to 10 hours of sleep. कम से कम 8 से 10 घंटे हमें सोना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा टायरिंग होता है. लास्ट वन हेयर इज स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग. सो यहाँ पे आप अपने काम को टालना बंद कीजिए. जब किसी काम की ज़रूरत होती है तब करना बंद कीजिए. यू शुड स्टार्ट योर वर्क early. So that's how it goes. This was all about the time management. I hope it's clear to you. Let's proceed ahead with the next one. So the next topic after time management here is skill of reading. So here we are going to learn about the skill of reading. Let's proceed. Reading is a process which requires readers' active participation. Of course, we all are the readers. Here is our book, maybe a magazine, maybe a newspaper, or any reading material with us. So we need to be an active learner. We need to be an active reader so as to grasp a lot of information within us. So we have to be active. We have to be an active participant for that. It involves the reader's previous knowledge and the thought processes. So in case you are interested in reading something, so you have to go ahead with your previous knowledge as well. You need to link the things with your previous knowledge and then proceed ahead with the things. You need to think, you need to make a thought process of each and everything that you are reading. Next thing here says the process of reading involves skimming, looking for the answers or the details, interpreting or comprehending the meaning, and satisfying the purpose for which the process was pursued. So that's how it goes. It's within the reading that there are many things which are involved. It's not that you're looking at a text and then start reading all of a sudden. Itna aasan nahi hai reading ka process. It involves a number of things that are a part of reading. The first one is skimming, यानी कि पढ़ते ही उसकी details को याद कर लेना. Next one is looking for the answers, specific or general, यानी कि आपको सारे आंसर्स पता होने चाहिए. इंटरप्रिटेशन करना किसी भी चीज़ के बारे में, कॉम्प्रिहेंड करना यानी कि अंडरस्टैंड करना. So many things are a part of reading. So let's continue here with the reading. There are a few salient features, a few characteristics you can say of reading. Let's know about them. Reading is pleasurable, यानी कि reading करने के बाद कई लोग ऐसे होते हैं जिनको reading बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा pleasurable होती है. A few of them are of course there who do not like to read, do hate reading. Some like me who are intermediators, जिनको पढ़ना ठीक लगता है but not very good. So there are some people who love reading. So reading is pleasurable at times. Reading is an active process, so you need to be active here. अगर आप passive है तो आप reading नहीं कर सकते हैं. So your participation means a lot while you're reading something. Next thing is the reading develops the vocabulary. So reading is of course going to help you out to develop the vocabulary words. While you're reading some newspaper article or maybe some article in the magazine, you're going to come across a number of wide variety of words, you can say, that is definitely going to help you out in improving your vocabulary. The next point here says reading should encourage the observation and the experimentation. So of course you can try putting in some new words, some new terminologies instead of using the old ones. So कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें already पता है, उनकी जगह पर हम substitute कर सकते हैं कोई और new word जब हम उसे पढ़ लेते हैं. So keep experimenting and be a good observer while you are reading. The last point here says encouraging reading. So especially for the children who are at a very basic level for now, they should try to read one article or maybe two of them in one day or so. And that's very important because it is definitely going to help them out in a long term. So next point here says essential skills involved in reading. So here we are going to learn about the essentials, the important things that are a part of reading. Let's conclude this. The first thing here is decoding. Decoding means
फोनोलॉजिकल अवेयरनेस. सो डिकोडिंग का मतलब होता है जहां पर आप क्या करेंगे, आप किसी भी वर्ड को प्रॉपरली रीड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द फोनेटिक्स. So when we are talking about the LKG or the UKG class kids, what happens is we are giving them CVCs, constant vowel constant. So this is how it goes. और वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है phonetics की help से. A says a, B says b, C says k. This is how it goes in LKG and UKG class, where the child is able to decode the new words. K at a cat, r at a rat, t ag a tag, so on, with the help of the phonetics. This is called as decoding. Second is fluency. While we are reading and we make it a habit, we are able to read all the things fluently. So this helps to enhance the fluency of reading. यानी कि फटाफट से किसी भी चीज को पढ़ते जाना. In a flow, you are reading something. Next one is vocabulary building. So here we have learned that whenever we are reading some newspaper article or any of the chapters in our book, we are definitely going to gain a word or so, which is definitely going to help us out in the long run. Next thing here is sentence construction. कई बार होता है बच्चों को sentences बनाने नहीं आते हैं, even when they are in the higher classes. So when they are learning to read, वहाँ से क्या होता है, उनके पास vocabulary तो आती ही है, साथ में उन्हें समझ में आता है that how do we have to create a sentence, what is the order of creating a sentence. Next one here is working memory and attention. यानी कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी attention, जो हमारी eyes का link होता है, वो पूरा का पूरा कहाँ पे होता है, बुक के ऊपर होता है. सो अटेंशन के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, हमारी मेमोरी भी यूज होती है. बच्चा क्या करता है, किसी ना किसी चीज़ को अपने दिमाग में रिटेन करके रखता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो पढ़ते ही फटाक से हमारे दिमाग में आ जाती है कि अच्छा हम कोरिलेट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. इन दैट केस आर मेमोरी एज वेल एज आर अटेंशन, बोथ ऑफ देम आर इनटू रीडिंग. द लास्ट पॉइंट हियर सेज रीजनिंग. सो रीजनिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रीडिंग. जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम चीज़ों को रीजन भी करते हैं. अच्छा वो हंग्री था तभी उसने चोरी कर ली. सो इस टाइप से जब हम बच्चों को स्टोरी देते हैं तो वो खुद ही रीजन करना जरूरी समझते हैं. सो दीज आर ऑल द एसेंशियल स्किल्स विच आर अ पार्ट ऑफ रीडिंग. लेट्स प्रोसीड अहेड विद द एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग. सो एडवांटेजेस क्या होते, क्या जरूरत है रीडिंग की, क्यों हमें रीडिंग करनी चाहिए. सो यू मस्ट हैव हर्ड दैट रीडर्स आर गुड लर्नर्स. सो दैट मीन्स रीडिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड you to a very bright future. So let's proceed ahead. Reading improves vocabulary. This thing we have already learned. Second is better comprehension. So comprehension here means understanding, किसी चीज को समझना जब आप उसे comprehend करते हैं. So usually we are all are having the comprehension passages in our examinations. Comprehension का वहाँ पे मतलब होता है कि किसी चीज को समझ के उसे reason करना है. So that's how it's going. So better comprehension means अगर हम लोग पढ़ते रहेंगे, हम चीज़ों को समझते जाएंगे, उनको logically आंसर करते रहेंगे. Next one is developing the critical thinking skills. अगर हम पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे तो उसे critically सोचना भी हमें धीरे धीरे आ जाएगा. Critically means that you have to think on the relevant side. जो चीज़ सही होती है उसके पार्ट पे सोचना. Next one here is improving the memory. जब आप पढ़ रहे होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम retain कर पाते हैं अपने दिमाग में. Next thing is improves the results at the school. So definitely it is going to affect your results in a positive sense while you are in the school. So बच्चों के लिए स्पेशली ऐसा कहा जाता है कि बेसिक लेवल से बच्चों को रीडिंग सिखाई जाए. So that's very important. Next one is analytical skills of the child improve. So बच्चा जो है वो रीजन करना सीख जाएगा, किसी भी चीज़ को लॉजिकली रीजन करना जल्दी सीख जाते हैं जब बच्चे रीडिंग करते हैं. Next is builds the confidence in the child. अगर एक बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके अंदर फ्लुएंसी आ जाती है, एंड ही इज एबल टू गेन द कॉन्फिडेंस स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल एंड स्पीकिंग समथिंग. नेक्स्ट वन इज हेल्प्स अस टू सोशलाइज. सो पटाई पटाई बोलने में हमारी ज़रूर मदद करेगा रीडिंग, बिकॉज व्हेन वी आर रीडिंग समथिंग वी आर एबल टू प्रोसेस अ नंबर ऑफ थिंग्स इनटू आवर माइंड. दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग. तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, साथ ही साथ में आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी. जब नॉलेज मिलेगी तो आप सोशलाइज ऑटोमेटिकली होंगे. यू विल ट्राई टू स्पीक, यू विल ट्राई टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इन फ्रंट ऑफ मोर एंड मोर पीपल. नेक्स्ट वन हियर इज ब्रॉडन्स द होराइजन्स. सो यहाँ पे क्या है, आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स खुल जाते हैं जब आप रीडिंग करना सीख जाते हैं. आपके पास बहुत सारे डोमेन्स होते हैं जिनके अंदर आप एंटर कर सकते हैं एज सून एज यू लर्न टू रीड.
नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स द राइटिंग स्किल्स. बच्चा जो है जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो इनकलकेट हो जाते हैं उसके दिमाग में, उसके माइंड में. दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प हिम हाउ टू राइट डाउन अ लेटर, मे बी अ क्रिएटिव राइटिंग सेशन, or maybe writing a dialogue. You can say whichever writing topic you can have here. So that is how the child is able to write, and he is able to process the information constantly in his mind. Next point it says is improves the focus and the concentration. So it is like when we are reading, our eyes are focused on certain places, कि यही पढ़ना है, ये पैराग्राफ के ऊपर ध्यान देना है. तो अभी हम फोकस्ड होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो ये हमारी अटेंशन को अच्छे से गेन कर पाता है. द लास्ट पॉइंट हियर इज डेवलप द इमोशंस. सो अगर आप इमोशंस डेवलप करना चाहते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि हर चीज़ के बारे में, अगर कुछ सैडन लिखा है तो आपके दिमाग में एक सैडन का इमोशन होगा, आप फील कर पाओगे कि नहीं उसके साथ गलत हो रहा है. अगर कुछ खुशी की बात है तो आपके दिमाग में भी यही बात चल रही होगी कि वो खुश क्यों है. सो रीडिंग जो है ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट विद द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. So reading is very important. The skill of reading is to be inculcated in each and every child. So that's all about this topic. Let's proceed ahead. So now here we are left with the last two topics after the reading skill. So the last two topics here with me are the memorizing and the second one is recalling. So we are going to learn about recalling first. Recalling मतलब किसी चीज़ को वापस से याद करना. वापस से याद करना is more important. यानी कि आप re-access कर रहे हो किसी भी एक event को, किसी भी information को, किसी भी thought को. So what does recalling means? It is the retrieval of the memory, that is the re-accessing of the events or the information from the past. यानी कि आपने पास्ट में कोई काम किया है, कोई चीज़ है जिसे आपको याद करना है वापस से. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिकॉलिंग. आपने वापस से याद किया, रिमेम्बरेंस भी आप इसे कह सकते हो. द नेक्स्ट वन हियर इज मेमोराइजिंग. मेमोराइजिंग का मतलब होता है याद करना. सो यू आर स्टिल लर्निंग समथिंग, यू आर मेमोराइजिंग द थिंग अगेन एंड अगेन, एंड देन इट इज गोइंग टू एंटर इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. नाउ द थिंग इज that how are we going to memorize the things? There are so many things in this world to be learned. How can we memorize each and everything? So here are a few ways in which you can memorize the information. The first one is visual imagery. So making an image in your mind while you're reading something, this is going to help you out to memorize that thing for a long period of time. कोई भी स्टोरी होती है, अगर आपको सभी को याद होगा रैबिट एंड द टॉर्टोइस की स्टोरी है, उसके लिए हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विजुअल इमेजेस होती है जो कि फॉर्म्ड होती है, जिसकी वजह से आज भी हमें वो स्टोरी अच्छे से याद है. Next is analogy. So analogy is definitely going to help you out. You're going to link the things with one another, and that's how you're going to learn that thing. Next one is theories. If you're having some proper theories, you're going to remember some points of that theories. You can memorize them easily. You can associate the things with one another. The fourth point here is association. So associating one thing with the another. So like we can say that the tree is having various parts in it, and we can associate the different imageries with us here, right? So categorization is the fifth point. Categorize करना किसी भी चीज को. अगर हमें पता है there are big plants, we are going to categorize them into the trees only. So that's how it's going to work. Categorization or classification. हमें पता है bed, sofa, couch, all these are a part of furniture. So categorization is another important thing. Repeated recitation, repeating the thing again and again. तो बचपन में बच्चों को क्या करवाया जाता है? During the childhood they are made to learn each and everything again and again. They are made to recite things again and again so that they are able to memorize that thing for a longer period of time. You can also call this as the ratification. Next one is learning in chunks. So chunks are the short packages. अगर आप किसी भी बड़े वर्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में काट करके लर्न करते हैं, वो आसान बन जाता है. हम नंबर्स को भी कुछ इसी तरीके से लर्न करते हैं. फर्स्ट 2 डिजिट्स 9711 8595, कुछ इस तरीके से हम ब्रेक करके चीज़ों को लर्न करते हैं. So the chunks are very important. So this is how you can memorize the things easily. You can organize this information, this knowledge accordingly. So this was all about memorizing and recalling. So here our unit ends. I hope it's clear to all of you, and you're going to definitely subscribe my channel after watching this video, and this is surely going to help you out with your CIG exam. Thank you so much for watching. I would be coming up with more such videos. Bye for now.